Hello student, good morning. Jai Sri Swaminarayan. Today we will study It So Happened 5th chapter Princess September. Okay, so here in this lesson there is a story of Princess September. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. So here द किंग ऑफ सियाम जो किंग था उसकी बहुत सारी डॉटर्स थी. सो इट वॉज कन्फ्यूजिंग फॉर देम टू कीप द रिमेंबर सो मेनी नेम्स. तो उसको याद नहीं रहती थी, इसलिए वो कहते कि इतना डिफ़िकल्ट है याद रखना नाम. तो उसने क्या किया था, वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो of course in Siamese, till he came to youngest whom called September. So in this way he decided to call them. अब उसने डिसाइड कर दिया कि उसको जनवरी, फरवरी इस तरह से बुलाएंगे. एंड जो 9th डॉटर थी उसका नाम था सितंबर. सो हियर देयर इज अ स्टोरी ऑफ प्रिंसेस सितंबर. The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gift on his birthday, he gave them. Generally what happened when there is a birthday of someone, he received the gift. He or she received the gift, is it? But it was a peculiar habit, strange habit थी. Instead of receiving gift, he used to give the gift to the person, टू द पीपल. वो क्या करते थे कि उस दिन वो गिफ्ट रिसीव नहीं करते थे, देते थे. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. वन ऑफ हिज बर्थडे, एक्चुअली उसके पास कुछ था ही नहीं. हैंडी मतलब हाथ में इमीडिएटली अवेलेबल कुछ था नहीं, तो उसने अपनी सभी डॉटर को एक ग्रीन पैरट जो है वो केज में दे देते हैं. द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट an hours every day in teaching them to talk. So all the princes were so happy and they started to teach the parrots different things. Presently all the parrots could say God save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 oriental languages. So God save the king and pretty Polly, no, not less than 7 oriental languages. Oriental means of the east, orient means country of the far east. Okay, तो नॉट लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में उसको सिखा दिया था. क्या सिखा दिया था? गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली. किसको? यस, पैरेट को. But one day when Princess September went to say good morning to her parrots, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. So one day Princess September's parrot was dead. She found that her parrot was dead. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. And she burst into flood of tears means बहुत ही वो रोती है. and जो maids जो दासियाँ होती है वो भी उसको comfort करने की कोशिश करती है. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any supper. So even the maids did not understand what to do because they were failed to convince the little princess सितंबर को समझाने में फेल हो गई. तो उसने क्वीन को कहा कि उसका जो पैरेट है वो मर गया इसलिए वो रो रही है. तो क्वीन ने भी कहा कि इट्स स्टूपिड एंड नॉनसेंस, इस तरह से रोना नहीं चाहिए. एंड दैट डे प्रिंसेस सितंबर वेंट टू बेड विदाउट डिनर. सुपर, SUPPR, सपर मीन्स डिनर. तो उस दिन उसको उस रात को उसको खाना भी नहीं खाया. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू पार्टी, सो दे put Princess September to bed as quick as they could and left her by herself. Even on that day the maids wanted to enjoy the party, and that is why they also left Princess September on her bed. Even they did not care about her supper, and while she lay in her bed crying,
Crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She saw that there is a little bird enter in her room and it was hopping. उसने कहा कि उसने देखा कि एक बर्ड उसके रूम में आ गया है और हॉपिंग कर रहा है. She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसू जो है पोंछ लेती है और उस बर्ड के पास बैठती है. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. And that bird began to sing and इट सेंग वेरी ब्यूटीफुली. एंड गार्डन जो था उसमें विलो ट्री थे और वो जो गोल्ड फिश है वो इन एंड आउट हो रही थी और जो ट्रीज़ जो है वो गोल्ड जो लेक है उसमें उसकी जो पिक्चर्स है रिफ्लेक्शन जो है वो क्लियर दिख रहा था. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गार्डन. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. And that bird started singing and that also princess September जो उसका वो जो रोना है वो भी स्टॉप हो गया है. इवन शी वॉज हंग्री, उसको सपर नहीं खाया था फिर भी वो भूखी थी, वो भी उसको याद नहीं है. That was a very nice song, she said. उसने कहा कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था. इवन सी हैड फॉरगॉटन अबाउट हर पेरेट्स. अपने पेरेट्स के बारे में भी भूल जाती, इतना वो ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो लिटिल बर्ड ने गाया. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो मीन्स नमस्कार करना, तो वो बर्ड ने उसको बो नमस्कार किया. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. So little bird asked that. So little bird expressed his desire that he wanted to take the place instead of parrot. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand I have a much better voice. He said that कि इतना pretty look तो नहीं है उसके पास, but yes he can sing pretty songs, कि वो अच्छे से गाना गा सकता है. Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. Again that bird started singing. That princess also clapped her hands और ये bird फिर से गाने लगा और ये princess September है. In this way she went to sleep, वो सो जाती है. When she awoke next day the little bird was still there and as she opened her eyes he said good morning. So when Princess September wake up, that little bird did not go away. It was there and that little bird said good morning to that Princess September. The maids of honor brought in her breakfast. So maids जो थी दासियाँ थी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है. And he ate rice out of her hands and he had his bath in her saucer. उसके saucer में उसको बात करवाती है. He began to sing again so beautiful that the maids of honor were quite surprised. So little bird started singing and here the maids who were present there, they were surprised for they had never heard anything like it. And Princess September was very proud and happy. So the maids were happy because they never heard such kind of songs in their life. And here Princess September was very happy and she was very proud and happy on it. Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. Princess ने कहा कि वो लिटिल बर्ड को अपनी 8 बहनों को बताना चाहती है. February to August. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. So in this way that Princess September gave her right hand fingers. So in this way little bird can sit on it. Yes, and say ये वो जो little bird था वो भी वहाँ पर बैठ जाता है. Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called one each of the princes. In this way
Princess September called all of her 8 sisters, and for each of them the little bird sang a different song, and little bird sang different song for the 8 sisters. सभी के लिए अलग गाना गाता है. But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. बट पैरट क्या बोल रहे थे? दो ही सेंटेंस, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली. At last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. उसके जो माता पिता थे किंग एंड क्वीन, they also delighted means they became so happy and they also surprised to see such a beautiful bird. I know I was right to send you bed without supper, said the queen. उसने कहा कि क्वीन ने कहा कि मैं राइट थी कि मैंने तुझे विदाउट सपर मैंने तुझे वहाँ पर बेड में सुला दिया. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग. किंग ऑल्सो एग्रीड दैट दिस बर्ड इज़ फार more better than the parrots. I should have thought you got quite tired of hearing people you say God save the king and the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. तो किंग यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो तो हम सुन कर थक जाते हैं गॉड सेव द किंग. ये जो पैरट है वो एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं, किंग गॉड सेव द किंग. तो उस तुम्हारी जो दूसरी बहन है उसको भी पैरट्स को कुछ अलग सिखाना चाहिए. सो हियर देयर इज़ अ कंप्लेन of the king about the parrots. The sentiment is admirable, said the king, and I have never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. And here king also said that he is tired to hear about pretty Polly. कि वो पैरट जो बोलते प्रीटी पोली वो भी सुन कर वो थक गए हैं. They say it in 7 different languages, said the princesses. लेकिन प्रिंसेसेस भी वहाँ पर थी. उसने कहा कि बट हमारा जो पैरट है वो तो 7 लैंग्वेजेस में बोल सकता है. I dare say they do. I dare say they do. I dare say means I agree. I agree कि हाँ वो बोल सकते हैं. But it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. So here king said that his counselor जो एक ही बात को 7 डिफरेंट तरीके में उसके पास रखते हैं. तो उसको पता ही है कि एक ही बात है 7 तरीके से उसको बताई गई है एंड इट इज़ क्वाइट बोरिंग. वो भी उसके लिए थोड़ी बोरिंग है और उसको ये पसंद नहीं है. द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस. वेक्स्ड मीन्स डिस्ट्रेट, वरीड एट दिस. तो बाकी की जो प्रिंसेस थी वो थोड़ी चिंतातुर हो गई. एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड. Glum means sad. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark. Lark is a bird, okay? While the little bird flew round and round her singing like a nightingale. Nightingale is a bird जो बहुत ही खूबसूरत गीत गाते हैं. तो ये जो प्रिंसेस सितंबर है वो पूरे पैलेस में घूमती है और उसका बर्ड जो है वो गाता रहता है. यू कैन सी इन पिक्चर्स टू. Things went on like this for several days and then the 8 princes put their head together. Means Princess September's bird was singing beautiful songs and other princesses disliked it and they heads together means वो एक दूसरे के साथ वो मिल जाती है. They went to September and sat down in a circle around her. So 8 sisters went to प्रिंसेस सितंबर एंड सेट. वहाँ पर उसको राउंड लगा बनाकर बैठ जाती. माई पोर सितंबर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. So all the sisters were sorry and regret for the death of the parrots and all showed their remorse for the parrot. And also they said that प्रिंसेस सितंबर हैड नो पैरट. ओके, तो कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई हमारे पास से वैसा पैरट अब है नहीं. सो वी हैव all put our pocket money
together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. So all the sisters, 8 sisters, said that they collected their pocket money and they will purchase a green and yellow parrot. Thank you for nothing, said September. उसने कहा कि बहुत शुक्रिया, grateful for themselves. I had a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. Princess September said that she had a little bird and it is a pet bird for her and there is no need to purchase the parrot for her. वो कहती है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने वाला लिटिल बर्ड है. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. So here, उसको थोड़ा पिन पॉइंट करती है, उसको थोड़ा सा और उसका आती है कि उसके पास जो वो बर्ड है वो तो कभी आता है कभी जाता है, और उसके बारे में अगर बात करें तो भी एब्सर्ड कहलाएगा, बहुत बुरा कहलाएगा. Do you mind our asking where your bird is now? They said. So all the 8 sisters asked that where the bird is now at that time. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. Princess September ने कहा कि वो अपने father-in-law को visit करने के लिए गया है. And what makes you think he will come back? asked the princess. So all the princesses asked that कब वो पहुँचेगा, कब वो वापस आएगा, when he will come back. He always does come back, said September. September said that he frequently and often visit his relatives, और वो वापस भी आ जाता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you will not run any risk like that. So वो जो प्रिंसेस थी उसको वो पिन करती है कि हमारी जो सलाह है वो तुझको लेनी चाहिए एंड उस तरह से उसको रिस्क नहीं लेनी चाहिए. इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. So these sister advises her that when this bird will come back, you have to put that bird in a cage. कि तुझे उसको केज में ही रखना है, इस तरह से उसको अलाउ नहीं करना है यहाँ से वहाँ उड़ना. That's the only way you can be sure of him. तो इस तरह से तुम श्योर हो जाओगी कि तुम्हारा बर्ड जो जाएगा तो फिर वापस आए या ना, इससे तो अच्छा है कि उसको केज में रखा जाए. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर सेड दैट शी लाइक दैट हर बर्ड फ्लाई इन द रूम. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली. ओमिनियसली मीन्स थ्रेटिंगली, उसको डराते हुए कहा कि नहीं, हमारी सेफ्टी फर्स्ट होती है, उसको केज में ही रखना है. दे कोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. एंड इन दिस वे द रेस्ट ऑफ द सिस्टर, जो 8 सिस्टर थी वो रूम छोड़कर चली जाती है. एंड हियर प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अनईजी मीन्स अनकम्फर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती अबाउट हर बर्ड्स. सो इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक है. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क बुक. बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.